Bismillahirrahmanirrahim. In today's lesson, we will work out to complete this pre-release material that we are working on for the last two classes. And getting back to the details of this pre-release material, just to have a recall, it is based on a shopping mall where you purchase your items of grocery, and when you get your bill, there is another counter that calls you, and you are asked to pay 1% of your paid bill to three of the charities. You can choose any charity, and 1% of your bill will be calculated and displayed with the amount, and the amount will go to that party. Now we have already solved the task 1 and task 2, and now coming to the task number 3, let's see what task number 3 asks, and then we will close the coding, making it a complete solution to the pre-release material. In the task number 3, it says show the totals so far by extending the task number 2 such that it accepts donations from more than one customers, and a charity choice of -1 to show the totals so far. This is the main task that is part of task number 3, as it says that you have to enter -1, and when you enter the -1, the coding should be able to print the charities collected for the charity number 1, 2, and 3. So to begin, let's go into the VB's coding again. And here we have the Visual Basic coding. You can see it on the screen. I will not go line by line because we are doing it for the last two lessons. If you have confusion, you can consult the recorded lessons for that. Now, let's play this coding and see what objectives have been achieved so far and what objectives are still pending to code into this program so that it is completed by today. Let's go into the results, and we see the result screen, and we input the values to see what calculations it performs. So having the previous coding, it says enter names of the three charities for today. And again, let's start with the SOS and ED and SKMT. And it makes console.clear to erase all the output screen, and then it restarts from the first line, and it says three charities are SOS, ED, and SKMT. And having your paid bill in your hands, this program asks you to select your choice of charity, either as 1 or 2 or 3, that to which charity you want to donate. If you say 2, now it has selected ED, and now it is asking you please enter your bill amount and also show the bill to the person who is standing by that machine. And here I can say that 10,000 was my bill, and now it's 1% is actually 100 rupees. And what the details will come, he says your bill amount is 10,000 of rupees and your charity amount is 100. That is basically the 1%. And it says your choice of charity is 2, and then it says enter 1 to start with a new bill and 0 to close the day. When you say 0, it shows you the day is closed for the system, and the charity collected for the SOS is 0, ED 100, and SKMT 0. So getting back to the task number 3, we will be slightly surprised that it has already been coded in our previous lesson for the task number 3 as well. It says a charity donation of a charity choice of -1 to show the totals, and also
we have created a situation that we get the totals by entering the 0. We have to change a little bit. Let's come back to our programming code, and there we adjust a slight change. We can see here this is our screen, and now coming into this line, we have to change our 0 by -1, and where it stands, the last loop, here it is. This is the code. Console.write line, enter 1 to start with a new bill, and then enter 0 to close the day. What you have to do is only change it with -1, and it will make the requirements according to the PRM. Your enter will still go into C4. It will be checked by the same loop while, and the same execution will continue, and the task number 3's requirement will be followed with it. What more we can do with it? We have got the charities in 3 accounts. We can also state something like that you have collected a total charity of this amount. For this, into this C4, let's add another variable, and we call it as C5. Now we have another variable, that is C5, and at the start I make it C5 is equal to 0, so that there is no confusion about its value. And when all of this happens, we come to the place where the donations are added, and here you can see account 1 is updated, AC2 is updated, AC3 is updated. And just to recall you, AC1, AC2 and AC3 are the amount of charity 1 is abbreviated as AC1. So when your if ends here, you can say C5 is equal to AC1 plus AC2 plus AC3. That will result in the sum of all the charities that have been so far paid by all the customer together. This will continue to add the 3 donations, and what you will do, or even we can take it out of that loop, we can place it outside the last loop, because the final values are. There was a breakdown, but it's good that we are back again. Let's come into the code, and we were here with the C. It is C5 is equal to AC1 plus AC2 plus AC3. This will sum that final amounts which are stored in the 3 variables, and at the output line we can add over here console.write line the total charity amount paid by customer is. यहाँ पे इसको आप क्लोज करें, यहाँ पे एंड का साइन लगाएं और इधर C5 लगा दें. अब ये टोटल अमाउंट भी शो करेगा. लेट्स गो बैक टू द कोडिंग रिजल्ट. ये हम वहां पे रिजल्ट में आ गए, और अब दोबारा से लेट्स स्टार्ट. 3 चैरिटी नेम्स चाहिए, फिर से वही नेम एंटर कर दें, और उसके बाद उसने आपके नामों को एक्सेप्ट कर लिया. एंड नाउ इट सेज सिलेक्ट योर चॉइस ऑफ चैरिटी, और मैंने यहाँ पे 1 एंटर कर दिया. जब आप इधर 1 एंटर करेंगे, इट आस्क फॉर द अमाउंट ऑफ द बिल. मैंने यहाँ पे 15,000 दे दिया, और फिर उसके बाद उसने क्या किया, योर बिल अमाउंट इज 15,000, योर चैरिटी अमाउंट उसने 1% उसका जो कैलकुलेट किया है, उस 1% की अमाउंट बनती है 150 रुपीज. योर चॉइस ऑफ चैरिटी इज 1, सो योर डोनेशन गोज टू चैरिटी नंबर 1. एंटर 1 टू स्टार्ट. हम यहाँ पे -1 लगाएंगे. अब
और वो इससे क्विट करके बाहर आ जाएगा, और जब वो इस रिजल्ट से बाहर आएगा देन इट सेज द डे इज क्लो। अब वो प्री रिलीज मटेरियल के टास्क नंबर 3 की उस रिक्वायरमेंट को भी हमने इंक्लूड कर लिया, जो वो कहता है कि -1 लिखने से रिजल्ट क्लोज होना चाहिए। द चैरिटी कलेक्टेड फॉर एसओएस इज 150, और लास्ट लाइन जो है वो नया एडिशन है, द टोटल चैरिटी अमाउंट पेड बाय कस्टमर्स इज 150। तो इसको अभी हम क्लोज करते हैं और वापस हम वीबी में आ जाते हैं, जिसमें इस कोड की वजह से हमें ये रिजल्ट मिला है यहाँ पे। अब आप ये देखें, ये कस्टमर लिखा हुआ इधर, ये कस्टमर्स होना चाहिए क्योंकि दिस इज द सम ऑफ ऑल द कैलकुलेशंस। तो यहाँ पे आके मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं इसको कस्टमर्स कर देता हूँ। तो ये एक वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि शायद एक कस्टमर की तरफ से इतनी अमाउंट है, ये उस दिन के सारे कस्टमर्स के लिए है। द टोटल चैरिटी अमाउंट पेड बाय द कस्टमर्स टुडे। इस तरह से हमने यहाँ पे इसमें फीचर्स को ऐड किया है। इसे एक लास्ट एडिशन चाहिए कि हम ये लिखें जब आपका अमाउंट है तो बताइए आपने कौन सी चैरिटी की है, उसके लिए आपको यहाँ पे एक और लेबल बनाना पड़ेगा और उसको आप लिखेंगे चैरिटी चॉइस एज स्ट्रिंग। चैरिटी चॉइस एक लेबल है, तो इसमें हम सेव करेंगे कौन सी चैरिटी जहाँ आपने जहाँ आप पैसे पूछे हैं आपकी चॉइस जो है उसका लिखना है। एक सेकंड, चलिए हमारे पास ये कोशिश करेंगे आपको पूरा बोल देंगे। अच्छा, अब हम यहाँ से सॉर्ट करेंगे कि कौन सी लाइन है जो डिफाइन करती है कि हमारी चैरिटी ने कहाँ देना है, और वो डिफाइन होता है इसको लिखिए चॉइस, सिलेक्ट योर चॉइस ऑफ चैरिटी। ये जो कोड अभी यहाँ पे हाईलाइट किया है इसकी वजह से आपको चॉइस पता चलेगी। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे उस लूप वाइल के बाद लिखना है एक चॉइस इज इक्वल टू 1 देन अगर मेरी चॉइस 1 थी तो चैरिटी सी में कैसे करो आपकी जो इनपुट को लिखा और आपका चैरिटी में 1 2 3 डिफाइन करता है C1 C2 C3 तो यहाँ जाएगा चैरिटी चॉइस इज इक्वल टू C1। अगर चॉइस 1 है तो चैरिटी चॉइस के नाम पे C1 नाम से करो, ऐसे अगर हमारी चॉइस है वो 2 है तो फिर क्या करो चैरिटी C इज इक्वल टू C2 और एल्स चैरिटी C इज इक्वल टू CP और साथ ही इक्वल है एंड करनी जरूरी है। अब नाम से हो गया, मान लीजिए कोई C1 जो है चैरिटी चॉइस में आएगा, अगर चॉइस मिलेगा तो C2 में आएगा और अदरवाइज फिर CP आएगा। आप इसको साथ डिफाइन करेंगे, दूसरे सेंटेंस में इफ चॉइस इज इक्वल टू C तो फिर चैरिटी C होती है। अब इसमें हमने नाम को स्टोर कर लिया, हम लिखते हैं जो चॉइस ऑफ चैरिटी इज दिस और इसके साथ ऐड करें यहाँ पे एंड चैरिटी इज और इसके साथ आपको ये नाम आएगा चैरिटी C। ये चैरिटी C आ गया। तो अब ये लाइन ज्यादा कॉपी हो जाएगी या बताइए जो चॉइस चैरिटी बस 1 इसको करके पास करेंगे and the charity for that number is जो इसका नाम है let's take for the last time, इसको करते हैं और इसे लिखते हैं आगे कभी ऐसा इसमें क्या होगा इसमें बस मैं याद रखना है गारंटी हो गई स्मार्ट है अभी ये हो गया है ये नाम देते हैं ये एक्स्ट्रा चार्ज का पैसा होगा इसके बाद जैसे भी किया ये क्या है तो ये एप्लीकेशन यू विल दिस लूप वैल्यू बाय C1 से स्टार्ट होता है आपकी चॉइस आएगा ये क्या है एक सेकंड निकालिए यू विल दिस और ये क्या है स्टार्ट निकालिए एंड हियर इज दिस है वो क्या है अभी हम कहते हैं अगर ये चैरिटी C को साइन ठीक है हम इसको देखते हैं सीधे देखते हैं लास्ट टाइम और देखते हैं कैसे क्या है एंड रिलीज द चैरिटी एसएस ईडी एसकेएमबी उसके बाद अगर एक्सेप्ट साइज में कर दिया और देखते हैं देखते हैं हम डाली और हम साइज में लगाया पास हो गए सेकंड लास्ट टाइम को भी लास्ट टाइम को क्या है एंड उसके बाद जो भी फिटिंग का चैरिटी होगी 150 आ रहा जो चॉइस चैरिटी टू एक चैरिटी ये वहां पे हमने अपडेट किया। अब नंबर के साथ आपकी चॉइस चैरिटी का नाम शो कर रहा है एंड मेरे पास एंड स्टार्ट कर एंड स्टार्ट कर दिया और ये उसमें किसी की तो है ये ये चैरिटी से ऐसे नहीं होगा तो हो गया सो दिस इज दिस पर्टिकुलर रियल एंड पास में सारा उसमें स्पेशली और उसके बाद देखते हैं इसमें या सारे क्लास में बोल दिया इसको फर्स्ट क्लास में चला चैरिटी नाम है तो हम बोल दिया और फिर उसके बाद देखते हैं उसका परसेंट करते हैं और तीन चैरिटी के नाम को शो एक असली है जो है चैरिटी को मेरे में दिया और उसके लिए में आगे तो चैरिटी से आगे और देन को नहीं होता है हम देखिए और फिर लास्ट में पास दिए पोजीशन सब बहुत अच्छा लगा एंड एनालिसिस